Hello everyone. Today we discuss about the hip bone. Okay, only important features and attachment I'll tell you now. Okay, see carefully and listen also. Now this is a hip bone. It is forming by the joining of three individual bones. What are these? Ilium, this is pubis, and this one is ischium. Okay, so ilium, pubis and ischium, these three togetherly join at the acetabulum. This area is known as the acetabulum. So it will form the hip bone. Okay, so first coming to this acetabular fossa, this is known as the acetabular fossa, where the head of the femur is attached to form the hip joint. Right, head of the femur is attached here on the acetabular fossa to form the hip joint. Now coming to the ilium first. Okay, so ilium has a medial or inner surface, outer surface, and some borders are there, and the in between these surfaces, the upper side, we have a area here. This is known as the iliac crest. So in the iliac crest we can see, if we divide it into anterior 2/3 and posterior 1/3, there will be one tubercle like structure here. So this is known as the tubercle on the iliac crest. So this iliac crest divide this iliac tubercle divide this iliac crest into anterior 2/3 and posterior 1/3. So we can see here, this is the right anatomical position, where anteriorly the acetabular fossa will be there, the anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. This is the pubic tubercle. This will be on the same coronal plane. Okay, anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. Pubic tubercle will be on the same coronal plane, and this acetabular fossa should faces anteriorly. Okay, so this is my left side hip bone. So now coming to the iliac crest हो गया. Now we see on the anterior side we have a anterior iliac spine, anterior superior iliac spine and anterior inferior iliac spine. Same on the posterior aspect we have, or you can say this is the outside, means this is the lateral side and this one will be your medial side. So this one same, the anterior inferior iliac spine and posterior superior iliac spine and posterior inferior iliac spine. ये है posterior superior iliac spine and this one is the posterior inferior iliac spine. Like this, anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine. ठीक है, so this is the iliac fossa. The whole is iliac fossa. So on the medial surface or inner surface we can see anteriorly there will be the iliac fossa, and posteriorly some irregular and rough area will be there. So the upper part of this area, this is important for the attachment, important attachment, but the lower side there will be the articular surface. This is known as the articular surface. It will articulate with the sacrum to form the sacroiliac joint. Okay, this articular area is articulated with the sacrum to form the sacroiliac joint. So this is about the inner side. But what in case of outer side, the outer side is little smooth rather than the inner side. Inner side anteriorly this is smooth, but posteriorly this is very irregular and rough. Okay, so this posterior aspect, see, there will be three lines are there. Okay, so if we see from the, you can say from the prominent of this iliac crest, from here to this part, this is the anterior gluteal line. Okay, anterior gluteal line, and this side you can see here, this is the posterior gluteal line, and from here to here
on the acetabulum. Here to here, this is the inferior gluteal line. So this is anterior gluteal line, posterior gluteal line, and ये है inferior gluteal line which will end on the surface of acetabular fossa. ठीक है. So this 3 gluteal line divide this gluteal surface into 3 regions. These regions are important for the gluteus muscles. ठीक है. So this is about the ilium. Now iliac crest also there will be intermediate area and an inner lip and outer lip. ओके, एक आउटर लीफ है, एक इनर लीफ है, एक इंटरमीडिएट एरिया है. ये iliac crest भी मसल अटैचमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ दिस इज द acetabular fossa. Now coming to the pubis part. So pubis, if we see here from the ilium to pubis, this line is known as the pecten pubis or pectinate line. This is the pectinate line. So this is the tubercle of the pubis, and this area, this is known as the pubic symphysis, which will attach with the another pubis on the, this is my left side hip bone, तो right side hip bone के साथ this will form the pubic symphysis. So this is the superior ramus, this one will be the inferior ramus of the pubis, and this is the body of the pubis. Okay, pubic tubercle, pectinate line और pecten pubis इसको बोलते हैं, and this is the inferior ramus, this is the superior ramus of the pubis. So same here, this is the inferior ramus. See on the medial aspect, this is the posterior, or posteriorly we can see this is inferior ramus. Sorry, see here, this is inferior ramus, and acetabulum के साथ ये जो pointed area है, this is the ischial spine. इसको हम लोग बोलेंगे ischial spine. So this ischial spine and the posterior inferior iliac spine, यहाँ पे जो ये notch दिख रहा है, this is the greater sciatic notch. This one will be your greater sciatic notch, and this is the ischial spine. Ischial spine से लेके ischium के body तक जो ये curvature है और ये जो notch है, this is the lesser sciatic notch. Okay, this one is the lesser sciatic notch. So this is the upper ramus of the ischium, this is lower ramus or superior inferior ramus. ये body of the ischium, and here the roughened area you can see here, this is the ischial tuberosity. This is a little big, this ischial tuberosity. This tuberosity is very, very important for the muscular attachment. Okay, so the two inferior ramus of ischium and pubis respectively, this will form the ischiopubic rami. This is known as the ischiopubic rami. So this foramen, this long foramen, large foramen is known as the obturator foramen. This is known as the obturator foramen. Ischial tuberosity, ischial spine, pubic symphysis, pubic tubercle, pectinate line or pecten pubis. So these are the important features we can see on the hip bone. इतना याद रहने से ही चलेगा. आर्कुएट लाइन वगैरह वगैरह, ये आर्कुएट लाइन यहाँ से लेके होता है, ये आप थियोरेटिकली जान लो तो चलेगा. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स वी कैन सी ऑन द हिप बोन. ओके, थोड़ा सा वेट करो, और कुछ बचा है कि नहीं देख लेती हूँ. Yeah, the main thing, this one is enough for you all. So now coming to the attachment on the ilium. Okay, first we see the ilium. Okay, so on the inner surface, this iliac fossa provide insertion of the iliacus muscle. यहाँ पे पूरे iliacus muscle होता है. ओके, दिस iliac fossa provide insertion of the iliacus muscle. Sorry, not insertion, this is, I'm very, very sorry, this is origin of the iliacus muscle, iliac fossa, origin of iliacus muscle. Okay, so now coming to this inner lip of the iliac crest, inner lip.
So this inner lip provide, this is iliacus, so this inner lip from here it is provide iliacus crest में transversus abdominis muscle here inner lip में, ठीक है. ट्रांसवर्सस मैं फिर से इलिया क्रेस्ट का अटैचमेंट अलग से बताऊंगी, बट नाउ रिमेंबर अबव द इलियाकस, ये जो इनर लिप में है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ओके, अप टू दिस इलियक ट्यूबरकल और जस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इलियक ट्यूबरकल, वहाँ तक पूरे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल है. फिर नियर द इलियक ट्यूबरकल इनर लिप में होगा क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ओके, क्वाड्रेटस लंबोरम. एंड पोस्टीरियरली दिस रफ पोस्टीरियर एरिया ऑफ द इनर सरफेस, यहाँ पे होगा इरेक्टर स्पाइनी, इरेक्टर स्पाइनी मसल, okay, erector spiny. And also this anterior superior iliac spine provide attachment of inguinal ligament and the sartorius muscle, inguinal ligament and sartorius muscle, ठीक है. anterior superior iliac spine, sartorius muscle and the inguinal ligament, ठीक है. यहाँ पे हो गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. फिर आपका हो गया यहाँ पे क्वाड्रेटस लंबोरम नियर द ट्यूबरकल, क्वाड्रेटस लंबोरम. एंड पीछे ये रफन एरिया में पूरा होगा इरेक्टर स्पाइनी. इरेक्टर स्पाइनी के नीचे 3 लिगामेंट है, इम्पॉर्टेंट लिगामेंट. एक होगा इलियोलंबर लिगामेंट यहाँ पे, फिर होगा आपका डोर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट एंड अनदर वन इंट्रोशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट. आफ्टर दैट इंट्रोशियस सैक्रोइलियम लिगामेंट के बाद ये आर्टिकुलर सरफेस आ जाता है, जहाँ पे इलियम सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट हो जाता है. इट विल फॉर्म द सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है. ये हो गया इनर सरफेस. नाउ कमिंग टू द आउटर सरफेस ऑफ द इलियम. सो ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इलियम में क्या बोली थी, ये है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड दिस वन विल बी योर inferior gluteal line, ठीक है. सो इन बिटवीन द inferior gluteal line and the anterior gluteal line, पूरे इस एरिया में there will be the origin of the gluteus maximus, gluteus maximus. After that here anterior and posterior gluteal line के बीच में this area will be the origin of the gluteus medius, gluteus medius. And beneath the posterior gluteal line this surface, यहाँ पे beneath the posterior gluteal line यहाँ पे होगा gluteus minimus, gluteus minimus. उल्टा बोल गई क्या मैं? ग्लूटियल मिनिमस, ठीक है. अब ये हो गया ग्लूटियल का. एंड इस सरफेस में अगर इंफीरियर सुपीरियर हियर सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के तरफ हम लोग देखेंगे, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के तरफ अगर देखेंगे, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द सम फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस, ओरिजिन ऑफ सम फाइबर्स ऑफ पायरिफॉर्मिस फ्रॉम द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से. तो ये हो गया ग्लूटियल मिनिमस, मीडियस, मैक्सिमस हो गया. अब ओके, अब ये इसमें आ जाते हैं एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन में. एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से इंग्विनल लिगामेंट एंड सर्टोरियस मसल, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड द and the straight head of rectus femoris muscle.
straight head of rectus femoris from the anterior inferior iliac spine. यहाँ से स्ट्रेट हेड है, रेक्टस एब्डोमिनिस का 2 हेड है, एक स्ट्रेट हेड एक रिफ्लेक्टेड है. सो रिफ्लेक्टेड हेड अबव द acetabulum fossa, this surface, from this surface, straight head will be originating from this surface